आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का आगाज। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य आदित्य सिंधिया और रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। ड्रोन के जरिए अद्वियात और तिब्बी टीके मुंतकिल करने की सहूलत। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा 15वें रोज में दाखिल। जोगीपेट में रोड शो से खिताब। नाई बिरादरी से किए गए वादों को पूरा करने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम। कांग्रेस कायदीन ने किया अनोखा एहतजाज। असली करेंसी को नकली करेंसी से बदलने वाली करीमनगर की टोली का पर्दाफाश। नकली करेंसी समेत नकद रकम की गई बरामद। कीसरा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना मुल्क भर में ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अद्वियात और टीके दवाखानों और दीगर मकामात पर पहुंचाए जा सकते हैं। जी हां, मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेलंगाना के वजीर बर्दी नज़्म व नस्ख KT रामाराव ने विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के जरिए वैक्सीन और दूसरी अद्वियात पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और दवाखानों तक पहुंचाई जा सकती है। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि ड्रोन के जरिए दवाएं पहुंचाई जाएंगी। इलावाजी टीके और खून बआसानी से एक मकाम दूसरे मकाम तक पहुंचाया जा सकता है और इसमें किसी ट्रैफिक खलल का भी खदशा नहीं है। मज़कूरा प्रोजेक्ट हुकूमत तेलंगाना ने IT डिपार्टमेंट के अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और दीगर इदारों के ताउन से शुरू किया है। కల్పదీక్షినందుకు ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో మన లేబర్ మీద డిపెండ్ కాకుండా రోబోట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వస్తాయి। దీంతో పాటు ఎక్కడెక్కడ కష్టాలు వస్తాయంటే ఎప్పుడైనా సడన్ గా పాము కాట్లు వస్తాయి, ఫ్లడ్స్ వరదలు వస్తాయి, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్లాంటప్పుడు ఇట్లాంటి అద్భుతాలు మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చని మీ అందరికి తెలియజేస్తూ అండ్ మరోసారి మీ అందరి తరఫున ఇక్కడ ఉన్న అఫీషియల్స్ అందరినీ థ్యాంక్ చేసుకుంటూ, ఎందుకంటే వికారాబాద్ ఎంచుకున్నారు। ఇక్కడ వికారాబాద్ అనేది యావత్ భారతదేశం ఈరోజు నిజంగా కూడా ఒక చారిత్రాత్మకమైన దినం। ఎందుకంటే భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ డ్రోన్ని వాడడం ద్వారా ప్రజల ప్రాణాల్ని కాపాడడానికి, ప్రజలకి తక్షణమే వైద్య సేవల్ని అందుబాటులోకి తెచ్చడానికి సంబంధించిన ఒక అతి ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు శ్రీ KCR గారి ఆశీస్సులతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిందో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి సింధియా గారు ఇక్కడికి రావడం మాత్రమే కాకుండా చాలాసేపటి నుంచి వారు అందరితో మాట్లాడుతూ అందరి అభిప్రాయాలు కూడా తెలుసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అభినందించినందుకు, ఈ కార్యక్రమానికి వారు విచ్చేసినందుకు ఒకసారి వారికి అందరం కూడా చప్పట్లతో స్వాగతం చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను। ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్తా ఉంటారు, ఏదైనా కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గురించి మాట్లాడినప్పుడు డ్రోన్ గురించి కానీ రోబోటిక్స్ గురించి కానీ లేదా కొత్త రకమైన టెక్నాలజీ వచ్చింది అని ఎప్పుడైనా చెప్తే KCR గారు ఎప్పుడు ఒకటే అంటారు, దీనివల్ల సామాన్యుడికి ఏం లాభం అవుతుంది అని అడుగుతారు। ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది మంచిదే, కానీ సామాన్యుడికి ఉపయోగపడని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది నిష్ఫలం అనే మాట చెప్తా ఉంటారు। मरकजी वजीर आदित्य सिंधिया ने कहा है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के लिए 3 जोन्स बनाए गए हैं। वो आज विकाराबाद में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें मज़कूरा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। रियासती वजीर KT रामाराव की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन के तहत एक महदूद ऊंचाई के लिए इजाज़त दरकार नहीं रहेगी।
वहीं ब्लू जोन के तहत ड्रोन को सिर्फ 200 मीटर तक ही उड़ान भरने की इजाजत रहेगी। ताहम रेड जोन के अंदर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में इस सिलसिले को वुसअत दी जाएगी और एक मैप भी तैयार किया जाएगा। Distinctly the green zones, the yellow zones and the red zones. And as I said in my speech, the green zones are where till a certain height you do not need permission to fly drones. Yellow zones is where you can only fly drones till 200 meters height, that too with a permission. And red zones where flying is prohibited. So that interactive airspace map will be in place in the next couple of months for the whole country. And then drones will fly across the country, permissions for which will be through a digital sky platform, which will be generated electronically. So your application will be electronic and immediately your permission will be also electronic. And therefore the human interface will be minimalized, therefore allowing facilitatory mechanisms for the growth of the drone industry. The whole issue that I talked about with Prem and Vikram Singh and Swapnik on the Munch is that the whole regulatory process has been simplified. Where you had 25 forms, you only have 5. Where you had 72 fees, you only have 7 or 8. Therefore allowing this industry to grow in the country. So realistically, COVID vaccines delivery to the most Can start happening tomorrow. You've seen an example of that happen here today. And I think in certainly where today there is no shortage of vaccines. The very fact that we've almost reached 70 crore vaccinations in the country. But wherever there is a demand for vaccines, that delivery pod can also be through a drone today, which was not possible until yesterday. How this is going to help? But my speech, the very fact that you have a health network throughout the country of PHCs, of CHCs, of district hospitals, you have nurses, you have doctors, but there must never be a shortage of medicine. Right. And that delivery mechanism for medicine in the event of there being a shortage will be through drone technology and can be through drone technology. And you saw not only delivery happen, but you also saw inventory happen. Yes. Where the nurse was actually logging in how many vaccines have been received. And then will come execution post that, where that medicine can then be given, whether it is for snake bites, whether it is for diseases like dengue, malaria, whether it is for COVID. All of that can be a deployment mechanism through drones. So this is an enabler for many industries, not only healthcare. For रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय की यात्रा जारी है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई रोड शोज से भी खिताब किया और तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इलाहाबादी कांग्रेस की जानिब से नाई बरादरी को लेकर एहतजाज किया गया है। नाई बरादरी के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत ने जो वादे किए थे उन्हें न पूरा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज किया है। नाज़रीन गिरामी, इन सियासी खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से नाई के मसाइल को लेकर शदीद एहतजाज किया गया। हैदराबाद में हजामों के मसाइल को लेकर कांग्रेस कायदीन ने अनोखा एहतजाज किया। पार्टी लीडर डी श्रवण की क़यादत में एहतजाज के दौरान लोगों की दाढ़ी बनाई गई और बाल मुड़े गए। श्रवण ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने नाई बरादरी से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया है, यही वजह है कि यह एहतजाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नाई बरादरी के मसाइल को हल किया जाए। Barbers community in Telangana is a very notable community and a very significant community, not only in terms of political context but also in the social life. The role of barbers is quite significant. Right from someone's birth till the death, the role of barber is quite significant in the rural lives.
or even in urban lives for that matter. And in Telangana movement, barbers have played a very predominant role. They played a pivotal role participating in Telangana movement and understanding the significant value that they can make to the political campaign. KCR has made so many promises for the welfare of barbers. He made a promise of 30,000 modern saloons to be set up across Telangana with the cost of government. He made a promise to set up a separate government federation for barbers' welfare. He made a promise to set up exclusively for women beauty parlors and also providing financial assistance to them. He made several promises for their welfare, providing free power and things like that. Unfortunately, for the last 7.5 years, KCR has completely forgotten and ignoring his promises. Today, barbers, the traditional barbers have become unemployed. They become berozgar ho gaye aaj. Because lot of corporates and big time houses have set up the unisex saloons across Hyderabad, across Telangana. As a result of that, the traditional barbers have lost their livelihoods. Therefore, Congress party from 2018 onwards consistently वह तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत में नई स्कीमात महज इसलिए मुतारिफ करवाई हैं कि रियासत के मालिया और मैशियत के खराब होने को जाहिर न किया जाए, क्योंकि ज़राए के मुताबिक हुकूमत आरोग्यश्री के 400 करोड़ रुपए बकायात अदा करने की वजह से इस पर अमल आवरी नहीं के बराबर है। इसी तरह शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम को दरकार 600 करोड़ रुपए जारी न करने की वजह से सैकड़ों दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। इसी तरह पर आज पाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को पाए तकमील करने के सिलसिले में 1300 करोड़ रुपए जारी न करने से कॉन्ट्रैक्टर्स एहतजाज करने पर मजबूर हैं। रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स का दौरा करते हुए फिल्मी अदाकार साई धर्म तेजा से मुलाकात की और उनके इलाज के बारे में तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि जुमा को केबल ब्रिज के पास हादसा होने के बाद वो अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने बताया कि फिल्मी अदाकार साई धर्म तेजा का हादसा सिर्फ हादसा ही नहीं है बल्कि मीडिया को किसी कहानी न खड़ा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिल्मी अदाकार साई तेजा आईसीयू में ज़ेरे इलाज हैं और डॉक्टर उनके इलाज और मुआलजे से मुतालिक अच्छे फैसले करेंगे। रियासती सदर बीजेपी रुकन पार्लियामान बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा 15वें रोज़ में दाखिल हो गई। बी संजय जुमा को जोबी की पेट में एक रोड शो किया। रोड शो से मुखातिब होते हुए उन्होंने दरियाला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दरियाला की बदउनवानियों तो रियासत की आवाम के सामने लाने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी रियासत में मुस्तहकम होते हुए इख्तिदार पर फायज होगी। इसके बाद केसीआर का जेल जाना यकीनी है क्योंकि उनकी बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना करते हुए हुजराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल को जो नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है उसे बर्खास्त करने या फिर उनके तबादला करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के इशारों पर काम करते हुए जब कभी इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाता है, टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए वो सरगर्म रहते हैं। रियासती वज़ीर तालीम और रुकन असम्बली महेश्वरम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बालापुर में बनाए गए गणेश मंडप पहुंचकर खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि बालापुर का गणेश काफ़ी मारूफ है और यहाँ पर लड्डू का हर्राज भी किया जाता है। इस मौके पर बदंगपेट के मेयर पी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఈరోజు వినాయక చవితి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్కి వచ్చేసరికి ఖైరతాబాద్ వినాయకుడికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుందో బాలాపూర్ వినాయకుడు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. మొదటి పూజ అందుకోవడం, నిమజ్జనం రోజు కూడా మొదట కదిలేది కూడా బాలాపూర్ వినాయకుడే. అది నా నియోజకవర్గంలో నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు భగవంతుడి ఆశీర్వాదము ప్రజలందరికీ ఉండాలని, గత 18 నెలల నుండి ఏ కరోనా మహమ్మారితోనైతే పోరాడుతున్నామో సమాజం ఎదుర్కొంటున్న ఆ విఘ్నాన్ని విఘ్నేశ్వరుడు పారదోలాలని, గత 18 నెలల నుండి అన్ని రంగాలలో అన్ని విధాలుగా ప్రజలందరూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు, ప్రపంచంలో ఎదుర్కొన్నారు. ఆ కరోనా మహమ్మారిని ఈ ప్రపంచం నుండి పారదోలేటట్టు శక్తిని ఏమన్న వినాయకుడిని కోరుతా ఉన్నాను. అందరికీ కూడా ఎవరెవరి జీవితాలలో మీ జీవితాలలో మీకున్న విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోయేటట్టు, గత సంవత్సరం ఎదుర్కొన్న చేదనుభవాలన్నీ పోయేటట్టు ఆ విఘ్నేశ్వరుడు చల్లగా చూడాలని, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలలో ముందు పోతున్న తరుణంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇంకా ముందుకు నడిపించే శక్తి नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़े बहादुरपुरा में फॉरेस्ट मैरिटाइड्स डे का इनेकाद अमल में लाया गया। यौम शहीदान जंगलात के मौके पर रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने जंगलात की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले जवानों की खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर ज़ू पार्क में बनाए गए खुसूसी पायलॉन पर फूल पेश किए गए और उनकी खिदमात को खिराज भी पेश किया गया। इस मौके पर ज़ू अथॉरिटी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस तकरीब से रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने खिताब भी किया। केसरा पुलिस की डिटेक्टिव टीम ने असली करेंसी के बदले नकली करेंसी देने वाली करीमनगर की एक टोली को बेनकाब किया और 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि डीसीपी कुशाईगौड़ा और डीसीपी मलकगिरी की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाई की गई और इस टीम में मुलविस अजीज़, अनवर पाशा, सुभाष चंद्र बोस, नागराजू और भाग्य लक्ष्मी को हिरासत में लिया गया है। महेश भागवत ने बताया कि करीमनगर के साकिन राजी रेड्डी के साथ मज़कूरा वाक़या पेश आया है। उन्होंने बताया कि टोली के कब्जे से 1 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं, जबकि 1,30,000 रुपए की असली करेंसी और एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि नकली नोट फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी का इस्तेमाल किया गया है।
ఇది ఒరిజినల్ క్యాష్ స్టాంప్స్ కూడా సార్ HDFC బ్యాంక్ అనేది సార్ Rachkonda Police Commissariat, Kisra Police Station Detective Inspector, SHO, under supervision of Additional DCP Kushaiguda and DCP Malkajgiri. They have detected a racket where people were exchanging dummy notes with the original note. In the name of 2000 rupees note will not be there in the market. So that they want to exchange 2000 rupees original note with the other denomination original notes. In this case, the complainant, Raji Reddy from Karimnagar, he has complained initially that in the name of land business, he was cheated for 5 lakh rupees by the gang. But after investigation, he only confessed that this gang is into the fake currency business and they are giving the dummy notes. On arrest of the gang, we have recovered more than 1 crore worth dummy notes. And these notes are only for the shooting purpose. It is also mentioned on the top of the note. Along with this 1 crore worth dummy notes of 2000 rupees denomination, our team has seized 1,30,000 rupees cash and one Mahindra Majero car along with the mobile phones of the accused. Out of the 5 accused, number 1 accused, his name is Muhammad Aziz. He is from Karimnagar district, but doing the real estate business in Hyderabad, and he is already arrested in 3 cases. Number 2 accused Muhammad Anwar Pasha, he is native of Peddapalli district. Number 3 accused Subhash Chandra Bose, he is working in Telugu film industry as assistant production manager. Number 4 Mari Nagaraju, he is native of Abdullapur Met. And number 5 Jangam Bhagya Lakshmi, she is a private nurse working in Karimnagar. She came into contact with the complainant and then she only motivated him for this day. 2 accused are still absconding and will definitely arrest them. Any past criminal history, sir? Yeah, only number 1 accused is having the past criminal history. 3 cases he is involved. His name is Muhammad Aziz alias Azam. Our appeal to the people that not to believe on such rumors that these notes of 2000 denomination is going out of the market and you should exchange this note with some other and all. From time to time, government will issue the notification in this regard. Secondly, any currency you are taking from unknown people and all, you should see whether it is original or not. It is clearly mentioned on the top of note that this note is only for the shooting purpose and the paper and all, everything is fake. So people should not trust on such transactions. That is all. रायदुर्गम पुलिस ने साई धर्म तेजा के खिलाफ आईपीसी की दफा 336 और 279 के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत केस दर्ज किया है। वादरे के तेलुगु फिल्म स्टार साई धर्म तेजा की हालत दवाखाने में बेहतर बताई गई है। गुज़िश्ता रोज बाइक सवार साई तेजा हादसे का शिकार हुए थे और उन्हें खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। हॉस्पिटल के जीएम संगीत रेड्डी ने बताया कि साई धर्म की हालत अब बेहतर है। आज देखते हैं हफ्ते के बाद की खबरें।
बाद में फ़रोग़ उर्दू की जानिब से माहनामा तारीख़ दक्कन के चीफ एडिटर डॉक्टर हबीब इमाम खादरी और मुआविन मुदीर डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन को तहनीत पेश करने की गरज से एक तक़रीब का अहतमाम साहिबान उर्दू हॉल फ़तेह दरवाज़ा में किया गया। सदर बज़्म डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम ने तक़रीब की सदारत की, जबकि मारूफ शायर यूसुफ रविश, डॉक्टर साजिद अली, सरबराह ज़िमरीस अदबी फ़ोरम ने मेहमान नवाज़ी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। मोतमद बज़्म जहांगीर क़यास ने तहनीत पेश की, जबकि शरीक मोतमद और इंचार्ज शुबे नशर व इशाअत मोहसिन खान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हैदराबाद नजाद कैनेडियन आदिल खान टोरंटो कनाडा में एमपी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत आदिल खान ने डॉन वैली पार्क, ईटी स्टीवन पार्क में इंतखाबी मुहिम चलाई। आदिल खान सेंट्रिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा के डॉन वैली वेस्ट से उम्मीदवार हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम में पार्टी के जिम्मेदारान डॉक्टर राना मोहम्मद सिराजुद्दीन, मिर्जा शहबाज अहमद, सेंट्रिस्ट पार्टी के मोबिन बानी, शिराज खान के अलावा असलम खान और कई मकामी कायदीन ने शिरकत की। पार्टी के कायदीन ने तमाम हिंदुस्तानी बरादरी, बिलखुसूस हैदराबादी नजात कैनेडियन शहरियों से इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और आदिल खान को कामयाब बनाने की अपील की है। आदिल खान मारूफ शायर नज़ीर अहमद खान मरहूम के फर्जंद और सैप मेडिकल्स के सरबराह नियाज अहमद खान के ब्रादर हैं। कनाडा में 20 सितंबर को इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। Require somebody to stand for it. We need somebody who can take our issues to the parliament, and we are the one who have to help each other, and each vote is count. Make sure 10th, 11th and 12th, those 3 days are advanced polling, so you know your targets. You have to go to each apartment, each citizens, you have to request them, no force, no nothing, just request them, please vote for Adil Khan. If this is the way we're gonna go, we're gonna win it. Everything we're gonna win. This today we have only few seats in Canada, all over Canada. This party is a national recognized party, and everybody knows it. Even Justin Trudeau and Rob and Kathleen, everybody is thinking where these parties came from. Just within 24 hours, within year and two, this party is growing like hell. Like so many members from the last few days in the past week, we have so many members are coming to the party, joining from each and everything. Right since morning, other parties are giving their gifts and everything and buying the votes, but we are not in the condition to do that. The reason is everybody knows, right? We are immigrants here. We come here to struggle. We join the companies, we work hard in the factories, and our kids go to the school. We make sure our kids become a doctor, engineer. We give them good education. But at the end of the day, like nowadays in Don Valley Parkway, everybody, most of the kids are going through with the drugs. आखिर में देखेंगे हम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का आगाज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य आदित्य सिंधिया और रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। ड्रोन के जरिए अद्वियात और तिब्बी टीके मुंतकिल करने की सहूलत। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा 15वें रोज में दाखिल। जोगीपेट में रोड शो से खिताब।
नाई बिरादरी से किए गए वादों को पूरा करने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम, कांग्रेस कायदीन ने किया अनोखा एहतजाज। असली करेंसी को नकली करेंसी से बदलने वाली करीमनगर की टोली का पर्दाफाश, नकली करेंसी समेत नकद रकम की गई बरामद। कीसरा पुलिस की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।